everyone, welcome back to my channel. I'm Gargi. Today I'll be creating this clean girl makeup look जो कि YouTube पे बहुत ट्रेंडिंग है. It's a type of no makeup look जो आप कहीं भी कभी भी कैसे भी कितने भी प्रोडक्ट्स में कर सकते हैं. So if you want to know how I did this makeup, please keep on watching and please don't forget to subscribe my channel and like this video. I'm starting off with the Vaseline Daily Brightening Cream. It's a type of moisturizer. You can use it on your body as well as on your face. It gets absorbed very quickly and give instantly a hydration and brightening to your face. I'm massaging it very nicely. To hide my dark circles and my acne scars, I'm using this Stellary Concealer Palette. I bought this from an Instagram page and you cannot get this in Flipkart or on Amazon because it's not available, I guess. Because मैंने भी ढूंढा था but मुझे मिला नहीं था. And I am applying it all over my face wherever I got pigmentation, blending it with the damp beauty blender. Damp beauty blender means wet beauty blender. You will soak this in water and then squeeze off the excess water from the blender and your damp beauty blender will be ready to blend your face. ये मेरी earrings बीच में आ रहे हैं. I'll not spare them. I'm using this Maybelline Fit Me foundation in the shade 115. मेरा मन था कि मैं सिर्फ कंसीलर लगाऊं बट अनफॉर्चुनेटली मुझे फाउंडेशन लगाना ही पड़ेगा बिकॉज आई हैड एक्ने बहुत ज़्यादा मुझे एक्ने हो गया था जिसकी वजह से मेरे पिट्स बहुत छोटे से पिट्स बन गए हैं और थोड़े से मार्क्स भी दिखते हैं अभी बट इट्स कम्प्लीटली क्लीन बट मेरे मार्क्स थोड़े से दिखते हैं. सो आई वॉज थिंकिंग ऑफ यूजिंग अ टैट बिट ऑफ फाउंडेशन जिससे कि थोड़ा सा मेरी स्किन इवन आउट लगे बिकॉज कंसीलर लगा के नेचुरल कलर स्किन का और जो कंसीलर का कलर है उसकी वजह से थोड़ा डिफरेंस आ गया है. सो आई हैव टेकन ओनली दिस मच अमाउंट ऑफ फाउंडेशन, वार्मिंग इट अप ऑन माई बैक ऑफ माई हैंड क्योंकि विंटर्स में फाउंडेशंस और कंसीलर टेंड टू बी हैवी और थिक, इसीलिए थोड़ा सा वार्म अप करवा दें अच्छा रहेगा. Evenly blending the foundation with the damp beauty blender all over my face. I've just taken a very little amount of foundation and blending it all over my face including my mouth area, around my mouth area because मुझे बहुत smile lines आती हैं वहाँ पे. Then to set my base at place, I'm using the Mars Trend Setting Loose Powder in the shade Translucent. You can see how I'm taking this. मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर पे ले रही हूँ बिकॉज जो ब्रश से होता है ना उसको सेट करने के लिए होता है अगर हमें बेकिंग करनी हो, बट मैं ब्लेंडर से इसलिए ले रही हूँ ताकि एक प्लेस पे सेट हो जाए बिकॉज आई डोंट वांट टू बेक, आई वांट टू सेट दैट. आप ब्रश से भी कर सकते हो, नो इश्यूज, इट्स जस्ट द प्रेफरेंस ऑफ द पर्सन. For the blush, I'm using the Swiss Beauty Ultra Blush palette in the shade 01. This is a very nice palette, very pigmented. It has every beautiful color, suits every skin tone, and it has red, pink, mauve, light pink, and all the beautiful highlighters. I have picked those pink colors from the palette and applying it on my cheeks, apples of my cheeks, picking up that golden and rose gold shade as an highlighter. These are very beautiful highlighters, gives you a subtle glow. As you can see, it's looking very beautiful. And now I am confused between these two, Maybelline one and Faces one, but I have chosen the Faces one क्योंकि Faces one वाला बहुत अच्छा है and ये remove भी बहुत easily से हो जाता है. It's voluminous, it gives length, it gives everything. It's just my favorite. And I'm using this in colors brown lipstick. And yes guys, we are done with this clean girl makeup look which was very easy to do and I think we just did it in 3 to 4 products. I hope you like this video. Bye bye.